آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹوڈے 24. میں آپ کے ساتھ ظفر حسن صدیقی. انسٹیٹیوٹ آف انڈو پرشین اسٹڈیز نے صوفی پوئٹ مولانا جلال الدین رومی پیار اور محبت کے پیغام پر گولف کلب لکھنؤ میں ایک سیمینار کا آیوجن کیا، جس میں سید سلمان چشتی، گدی نشین درگاہ اجمیر شریف، سید اختر حسین، پروفیسر ان سینٹر آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز JNU نیو دہلی، محمد اسرار القادری، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پرشین، جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی، حضرت مولانا صوفی شاہ محمد نصیر الدین قادری غوث آباد شریف سلطانپور نے مولانا رومی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ڈاکٹر ارشاد علی نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد حسن وارث کی رومی جامی اور بیدم شاہ وارسی کے کلام پر قوالی کا پروگرام ہوا، جس نے پورے ماحول کو صوفیانہ بنا دیا. is dedicated to the philosophy, to the message of the universal brotherhood of Maulana Jalaluddin Rumi. So thank you. تمام حاضرین بس قابل مبارکباد و ستائش ہے. خاص طور سے عالی وقار جناب ارشاد احمد صاحب کا میں شکر گزار، اور خاص طور سے مشفق کرم فرما عالی وقار جناب سید اختر حسین صاحب کے ساتھ، اور آپ سبھی کا میں اور Prestige and Hawaii Namus or Nahwatema, and sometimes elevates our preeminence by acting as the plateaus and gallons for us, and Jalun Jalinu Sema like this. In the light of the above discussion, it can be presumed that love can never be defined in concrete terms, as I have already discussed about this point, and Rumi has very beautifully said that har che guyam ishq ra sharho bayan kyun be ishq ayam khajil pasha mazan. Here I would rather restrain myself from delving deep into the philosophical or sophistic connotations of love. Rather, I would take out some of the couplets or dates from the poetic treasures of Maulana Rumi to show his perception of love to cater to the general audience here. Because Rumi has taken help from different stories, tales and fables, etc. As he himself admits that Kushtaran Bashar ke sirre dil baran gufte ayat dar hadith digaran. The persona of Ghalib was that he was a well-read man. Believe me, if Ghalib had not written a single poem according to our understanding of Ghalib, he would have been a very good scholar of Indian literature or Indo-Persian literature or even Arabic literature. The canvas of his thought is so large, and his imbibement, what he imbibed, because Ghalib, when we talk about Ghalib does not exist in isolation. There is a long tradition which regulates Ghalib, a tradition of 1,000 years. Imagine that he is following two important traditions. One is Persian tradition and the other is Arabic tradition. He refers to Firdausi, he refers to Nizami, he refers to Rumi, he refers to Faizi, he refers to Khusro, he refers to Bedil. So it doesn't mean that he was just name dropping. He had studied their words lock, stock and barrel. مولوی ہرگز نشد مولائے روم، از غلامی شمس تبریزی نشد. آپ تمام حضرات کو بہت بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت مشکور ہوں ہمارے پروفیسر جناب سید اختر حسین صاحب کا اور تمام انسٹیٹیوٹ کا، جو آج مولانا رومی کی جو روحانی تربیت ہے، تعلیمات ہے، اس کو نوجوانوں کے ساتھ اور تمام جو اکیڈمکس یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ایک اکیڈمک لیول پہ سینہ بسینہ
यहाँ आप तमाम जो लोग बैठे हैं और जो मेरे ख्याल से लाइव भी हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं इसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, ये बहुत अहम लम्हात हैं जहाँ इश्क हकीकी और मकाम फना को सामने रखते हुए मौलाना रूमी की ज़िंदगी और आपकी जो मुबारक सवाल हयाती रही उसको यहाँ पे अभी हजरत ने जो एक खानकाई और रूहानी एतबार से, जो तकरीरी एतबार से बात कही, उसी के साथ साथ जो नौजवान बच्चियाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी बहनों ने यहाँ पे जो एकेडमिक पेपर्स प्रेजेंट करें, उसमें उन तमाम नुक्तों को सामने रखा गया कि किस तरीके से मसनवी और तमाम जो मौलाना रूमी के फ़लसफ़े हुए इश्क हकीकी को अवाम नास तक पहुँचाने के लिए अजमेर शरीफ के हवाले से और कोनिया शरीफ के हवाले से जो मौलाना रूमी का आस्थाना है, कुछ बातें करके जो प्रोफेसर साहब ने हमें कहा था कि एकेडमिक सेमिनार है, इसकी प्रोसीडिंग अंग्रेज़ी में रहेगी, तो एक मुख्तसर सा पेपर है। बारगाह गरीब नवाज में आप सबकी हाज़िरी हुई होगी और वहाँ आता है नूर में जो बेदमी दलान है, जब हम वहाँ पे बारगाह गरीब नवाज आस्थाना में हाज़िरी के लिए जाते हैं तो वो एक वहाँ मौलाना जामी का एक शेर लिखा है, काबत रोशाद बाशद ई मकाम हर के नागिज आमद इंजा शुद्ध तमाम, कि ये मरकज है आशिकों का, यहाँ जो भी अधूरा आता है अपने आप को पूरा पाता है। ये तो हमने बचपन से वहाँ पढ़ा देखा भी। पहली मर्तबा जब हम कोनिया शरीफ गए तुर्की में, तो मौलाना रूमी के आस्थाने पे जब वहाँ पे हम दाखिल होते हैं, जो तू भी है उसी काफिले शौक में इकबाल, जिस काफिले शौक का सालार है रूमी। नाउ कम टू द आंसर पार्ट। इस असर को भी दिया है उसने कोई पैगाम? क्वेश्चन मार्क। रूमी इज आस्किंग वेदर ही हैज गिवन अ टीचिंग और एनी मैसेज टू दिस जनरेशन। कहते हैं चरागे रहे अहरार है रूमी। ही इज अ लीडिंग लाइट फॉर द पीपल हु आर फ्री, फॉर द फ्री पीपल। यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, because you will find many points. He is not apolitical in any sense. You see, we are bounded by geographical boundaries because we have geographical boundaries everywhere. And one of the film songs is there, but I think that contains a very good message. धरती नदियाँ पवन के जो कि कोई सागर न उन्हें रोके, सरहदें तो इंसानों के लिए है, सोचो तो क्या पाया हमने इंसान होकर। Okay, so Rumi also gives a message of, he smacks of all the barriers of geographical boundaries. इंसान गिराई की जो एक इंतहा है वो रूमी के यहाँ हमें मिलती है, क्योंकि वो कहता है कि अगर हम एक बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में बट कर रह जाएंगे तो हम वही होगा जो आज रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है, वही होगा जो इराक और अफगानिस्तान में हो रहा है। तो रूमी ये कहता है, एक छोटी सी दास्तान के जरिए बयान करता है कि मछलियों का एक जत्था एक दरिया में रहता था, इत्तेफाक से पानी कम हो गया उसमें, तो इन लोगों ने ये कोशिश की कि किसी और दूसरे तालाब में चले जाएं, तो उस इत्तेफाक से वो माहीगीर आ गया, वो पानी कम देख करके उसको वो वहाँ से निकालने लगा। तो एक ने क्या किया, हीले बहाने से वो अपने आप को मुर्दा तस्वुर कर, तैरने लगी, उसने मुर्दा तस्वुर करके उसको छोड़ दिया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा उछल रही थी वो पकड़ी गई। तब उसको एहसास होता है कि अगर वार हम अजिन मेहनते गर्दन शिकन दिगर दरियाना साजम सकन, कि अब दरिया के अलावा और कोई चीज़ को, बस दरिया से मुराद समंदर में मैं रहूँगी, समंदर की बाउंड्री नहीं है। जब वो एक आबगीर में रह रहा था तो वो देखिए वो एक माहीगीर का शिकार वो मछली हो गई, लेकिन अगर समंदर में, तो अगर हम सोचिए, अगर इमेजिन कीजिए अगर ये बाउंड्रीज हट जाएं तो फिर इंसान से प्यार करेगा, वो इंसानियत होगी, हर तरफ प्यार मोहब्बत होगा। घरचे ये विजुअल थिंकिंग है, लेकिन रूमी का एक जो पॉलिटिकल परसेप्शन है वो उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। Now the question answer session is over, and because we have to adhere to the time limit also, and with all humility may I request the mover and shaker of this particular evening, Janab Irshad Ali Sahab, with this couplet, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है,
عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. Please propose the thanks. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. Rumi says life is meant for devotion. Without devotion, life is but a shame. Good evening, everyone. As we conclude this enlightening session, it is my honor and privilege to express my heartfelt gratitude to all those who made this event a success. First and foremost, I extend my deepest appreciation to our esteemed speakers, Ms. Pratima Sharma, Ms. Neetu Bhaskar, Janab Shah Mohammad Nasruddin Qadri, Janab Mohammad Arshadul Qadri, Janab Sayyid Salman Chishti, and Janab Sayyid Akhtar Hussain for their profound insights into the timeless wisdom of Rumi. Your words have truly enriched our understanding of his spiritual and poetic legacy. A sincere thanks to our audience for your presence, engagement, and thought-provoking participation in the question and answer session. Your enthusiasm added great depth to this gathering. I also extend my gratitude to organizers and support staff who have worked tirelessly behind the scene to ensure the seamless execution of this event. I am also thankful to Secretary and Captain of Lucknow Golf Club, Janab Rajneesh Sethi and Janab Aris Nanda, for providing us such a beautiful venue for this event. Thank you all once again for making this evening a memorable one. May we continue to seek wisdom, love, and unity through the timeless teaching of Rumi. Wishing you all a wonderful evening. Now enjoy the Qawwali and followed by dinner.
جلسہ کہاں